जय जगन्नाथ सांग माने आज गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक ऊपर हम डिस्कशन करिबा मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कौन, मार्जिनल कॉस्ट कौन, मार्जिनल कॉस्टिंग कौन, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग भितर कौन डिफरेंस अछि ता ऊपर हम डिटेल रे डिस्कशन करिबा। So there are two techniques of product costing and income determination. Product costing and income determination करिबा पई हमें दीटा टेक्निक्स यूज करंदी। प्रोडक्ट कॉस्टिंग माने कौन सांग माने प्रोडक्ट रो कॉस्ट, कॉस्ट माने कौन द एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड विथ द प्रोडक्ट। एग्जांपल एटा होची गोटे पेन, तो यही पेन रे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोथ आर included अच्छी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस माने कौन द एक्सपेंसेस व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट, जोटा कि प्रोडक्ट सहित अटैच अच्छी बा प्रोडक्ट सहित आम ताको देखी पारुछंदी। जेमते कि एई पेन रे आम देखुछंदी हमर प्लास्टिक केथिरे इन्वॉल्वमेंट अच्छी, इंक अच्छी, ए सब होचे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जहाँ आम आइडेंटिफाई करि पारुछंदी। सिमिलरली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी अच्छी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माने कौन जोटा इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट अच्छी, जमती कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन खर्च देव, ऑफिस रे जो माने काम करदेवे पैकिंग पाई, ऑफिस रिलेटेड जो माने ऑफिस रे काम करन से सैलरी दिया देव, पैकिंग रिलेटेड ये सब होची हमर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ गोटे हमर मार्जिनल कॉस्टिंग। इनकम डिटर्मिनेशन पई हम यूज करते अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रे बोथ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट रो यूज करा जाए, किंतु मार्जिनल कॉस्टिंग रे ओनली हमें वेरिएबल कॉस्ट ही इंक्लूड करंदे। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को जनरली हमें कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट रे हमें करंदी एंड फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन नबा पई हमें यूज करंदी मार्जिनल कॉस्टिंग। तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रो अब्जॉर्प्शन माने जोड़ा के अब्जॉर्ब हे पड़ती हो, जो कॉस्ट के हमें अब्जॉर्ब करि पारंती। नेक्स्ट आसला अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रो अदर नेम भी अच्छे सांग माने ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ट्रेडिशनली पूर्वरु यही मेथड ही अप्लाई करा होतला, जेउतरे बोथ फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को निया जाउतला। नेक्स्ट आसला कन्वेंशनल कॉस्टिंग। कन्वेंशन रो मीनिंग है जो ट्रेडिशन, जो प्रथा हमें अप्लाई करतले। नेक्स्ट है आपको हमें फुल कॉस्टिंग भी कहते। फुल कॉस्टिंग कौन पे कह जाए, कारण बोथ इट इंक्लूड्स बोथ फिक्स कॉस्ट as well as variable cost। बुझी पारिले। So this is the total cost technique under which total cost, that is fixed cost as well as variable cost, is charged as a production cost। production cost रे हमर both fixed cost and variable cost को हमें include करंते। all manufacturing costs are absorbed in the cost of the product produced। सब प्रकार मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जहाँ जहाँ भी अच्छी सब गुड़ाक आम अब्जर्व कर प्रोडक्ट रे। सो अब्जर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच इज सेम यूज इन द कॉस्ट शीट। बुझी पारिले समस्ते। से सांग माने मु गोटे एग्जांपल नहीं ताकि आपण आउरी भलरे बुझी पारे। ये होची बिजनेस डे टू डे बेसिस रे बहुत सारा एक्सपेंसेस करची, जेमते कि हमर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कौन, जो कॉस्ट के सब बड़े कांस्टेंट थाए ताको हमें फिक्स कॉस्ट कहते, इरेस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट आपण जेते भी प्रोडक्शन करंतो किंतु कॉस्ट सब बड़े फिक्स थाए। वेरिएबल कॉस्ट कौन, प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली सेडा चेंजेस हुए। 4000 प्रोडक्शन पाई वेरिएबल कॉस्ट डिफरेंट थाए, 5000 पाई डिफरेंट थाए, किंतु फिक्स कॉस्ट आपण 4000 यूनिट प्रोडक्शन करंतु बा 5000 यूनिट प्रोडक्शन करंतु सब बड़े समान थाए। तो ये सब एक्सपेंसेस आमे कहाटर रिकवर करंती, अल्टीमेट कस्टमर टू आमे रिकवर करंती। तो ताको आमे केमिति रिकवर करिबा, बोथ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट से सब आमे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रे करंती। बुझी पारिले। एग्जांपल जेमिति कि रेंट होची फिक्स एक्सपेंसेस। आमे मन कर एग्जांपल नबा कि आमे रेंट दोचे गोडाउन रो 1 लाख पर मंथ। 1 लाख पर मंथ आमे चार्ज करूछंदी बा रेंट आमे जो रेंट पे करूछंदी गोडाउन मालिक को, से सब खर्च आमे जदि गोटे कस्टमर रिकवर करबा एटा ठीक कि
भूल संपूर्ण भूल सो वी चार्ज टू एवरी कस्टमर बट हाउ केमिति से आम एब्जॉर्प्शन टेक्निक्स अप्लाई करिए suppose we estimated that this year we will able to produce how much 50,000 unit जदि आमे एस्टिमेट कले कि ए वर्ष आमे केते यूनिट प्रोडक्शन करिबा 50,000 यूनिट आमे प्रोडक्शन करिबा तो एब्जॉर्प्शन रेट केते आसीबो सांग माने कि हमर जो फिक्स एक्सपेंसेस थिला 1 लाख पर मंथ डिवाइड बाय 50,000 यूनिट जहाँ आम एस्टिमेट कर कि ए वर्ष आम करेन्ट ईयर रे 50,000 यूनिट आम प्रोडक्शन करवा तो केते बाहरला रेट 2 पर यूनिट आम एवरी कस्टमर को केते चार्ज करि परिबा 2 पर यूनिट बुझी पारिले। नेक्स्ट आम डिस्कशन करबा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग all variable manufacturing cost and fixed factory overhead are treated as product cost hence charged to product process or operation जहाँ भी आमर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और फिक्स ओवरहेड को आम कौन हिसाब ट्रीट करूँ प्रोडक्ट कॉस्ट जोड़ा प्रोडक्ट सहित एसोसिएटेड तो से सब को आम क्या चार्ज करिया प्रोडक्ट को चार्ज करवा। नेक्स्ट आसला ऑल एडमिनिस्ट्रेटिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये सब हूँ आमर कौन इनडायरेक्ट कॉस्ट ये सब को आम कौन ट्रीट करवा सांग माने पीरियड कॉस्ट से आम राइट अप करिया। अच्छा कहले कोटी राइट अप करिया आमर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रे आम राइट अप करिया सो दीज आर राइट अप अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द पीरियड ए वर्ष जहाँ भी प्रॉफिट होची से आम राइट अप करवा बुझी पारे सांग माने बुझी पारे सांग माने कि ऑल एडमिनिस्ट्रेटिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट और से सब को राइट अप कराउछे अगेंस्ट द प्रॉफिट। नेक्स्ट आम डिस्कशन करबा मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग मीन्स आम एक्स्ट्रा यूनिट जहाँ भी प्रोडक्शन करबा एक्स्ट्रा जहाँ भी खर्च लगुच ताको आम कौन कहती मार्जिनल कॉस्टिंग तार अलगा अदर नेम कौन अच्छी वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहती एंड डायरेक्ट कॉस्टिंग भी आम कहते वेरिएबल कॉस्टिंग एथिपाई कहुए कारण वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करा जाए। So marginal costing is a cost accounting method that helps business to find out the cost of producing one additional unit of a product or service. Extra unit production पाई जहाँ खर्च होची ताको आमे कौन कहती marginal costing कहती। An alternative to absorption costing ये होची हमरो marginal costing. Under these techniques only variable cost are charged as product cost. केवल वेरिएबल कॉस्ट को आम नियंती प्रोडक्ट कॉस्ट हिसाब रे एंड इंक्लूडेड इन इन्वेंटरी वैल्यूएशन स्टॉक वैल्यूएशन रे आम केवल वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करती। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर नॉट अलॉटेड टू प्रोडक्ट बट आर कंसीडर दस चार्ज डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दैट ईयर माने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आम डायरेक्टली चार्ज करती फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को आम अलॉट करती नहीं कंसीडर करती नहीं। फिक्स कॉस्ट डू नॉट एंटर इन द स्टॉक वैल्यूएशन बोथ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग ट्रीटेड एज नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दैट इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एज पीरियड कॉस्ट ताको आम पीरियड कॉस्ट हिसाब से कंसीडर करें ये सब हूँ आमर जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अच्छी ताको आम एज ए पीरियड कॉस्ट हिसाब से ट्रीट करूँ प्रोडक्ट कॉस्ट हिसाब से ट्रीट करू नाहांती। सो मार्जिनल कॉस्ट इज द टोटल ऑफ ऑल वेरिएबल कॉस्ट इट इज कंपोज ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड एथिरे कौन कौन इनक्लूड अच्छी डायरेक्ट कॉस्ट एंड वेरिएबल overhead. An important point is that marginal cost per unit remains always unchanged. पर यूनिट सब बड़े मार्जिनल कॉस्ट जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सब बड़े अनचेंज थाए इरेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ द एक्टिविटी जिते लेवल आप प्रोडक्शन करंतु ना कहीं तार यूनिट सब बड़े अनचेंज रुहे माने सब बड़े कांस्टेंट रुहे। The accounting system in which variable costs are charged to the cost unit and fixed of the period are written up in full against the aggregate contribution. Aggregate contribution. Contribution माने कौन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आम जानी कि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट बुझी पारे।
तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रे वेरिएबल कॉस्ट जहाँ भी अच्छी से सब चार्ज होची कॉस्ट यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट से सब को आम राइट अप कर एगेंस्ट द कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आम डिस्कसन करिए कि डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग भितर कौन सब डिफरेंस अच्छी। फर्स्ट है बेसिस। बेसिस रे आम कौन लिखले ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। So in case of marginal costing only variable cost are charged to product आम डिस्कसन ऑलरेडी कर सारी केवल वेरिएबल कॉस्ट ही कंसीडर करती। फिक्स कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट एंड चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। whereas absorption costing रे both fixed as well as variable cost को आम कंसीडर करती। all cost both fixed and variable are charged to the product। the fixed factory overhead cost is observed in unit produce at a rate predetermined जमती कि मुझे रेंट रो एग्जांपल नहीं थी बुझी पारिले। सेकेंड बेसिस है आमर सांग माने वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट मार्जिनल कॉस्ट ओनली। whereas in case of absorption costing stocks are valued at total cost which includes both fixed and variable cost। स्टॉक एठारे मार्जिनल कॉस्ट माने वेरिएबल कॉस्ट रे कंसीडर करा होची किंतु एटी जो स्टॉक अछि ए सब स्टॉक को हमें फिक्स एंड वेरिएबल बोथ रे हमें वैल्यूएशन करूछंदी। नेक्स्ट डिफरेंस है मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। In case of marginal costing, relative profitability of the product or department is based upon the study of relative contribution made by the respective product or department। बुझी पारिले कि आमे जहाँ भी प्रॉफिटेबिलिटी करूछंदी बा प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन करछनी का बेसिस रे ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रीब्यूशन। द मैनेजरियल डिसीजन इज गाइडेड बाय द contribution only। whereas in case of absorption costing relative profitability is judged by profit figure which is also guiding factor for managerial decision। एडी profit factor को नियंती एडी contribution factor को नियंती बुझी पारले। these are the difference between marginal costing and absorption costing। thank you so much। जय जगन्नाथ।